of the video, chapter number 5, Theory of Demand. I hope the part 1 is very clear to you, and if not, you can hear it again and again and again. If it's not, then you can tell me. I will tell you in live class once again. So in this video we will talk about individual demand, actually, that these are the two functions of it. The formula is given right here. How it is different from market demand, I'm going to explain it in the factors affecting individual demand. So there are few goods that affect the individual demand, and these are listed into different types of goods. Category number 1, normal goods. Now, what do you mean by normal goods? Which are having a positive relationship between income and demand. Positive relationship मतलब अगर income of the consumer बढ़ जाएगी, then demand is also going to increase. Positive है, very positive. Like for branded clothes and expensive cars, ये हम तभी ले सकते हैं when we have increase in income. Okay, the second good is complementary good, or we can say that these are those goods which are incomplete without each other. Okay, the definition says these are those goods which are consumed together or simultaneously. So what can be the examples of complementary good? Number 1, that is pen and ink. Both are incomplete without each other. Car and petrol. Right? Third, substitute goods. As you can see, each other, that means they are competing. So the definition of substitute goods says these are also known as competing goods or substitutes of one another, which can be used with ease in place of one another. एक दूसरे की जगह पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. As you can see, if there is rise in the price of coffee, there is rise in demand of tea, which says there is a positive relationship between price of a good and demand of its substitute. मेरे पास एक नहीं मिल पा रहा तो मैं दूसरे को ले लूँगी. जैसे कि there is fall in demand of Coca-Cola and fall in price of Pepsi also. So the next factor is taste and preferences of the consumer. What it is showing to you, how the preferences gets changed of the consumer. Like earlier we are driving a scooter, but now we want a bike. Earlier we were using this black and white TV, and now we want this LED. So how our demand affects that goods which are more in fashion are higher in demand than goods which are out of fashion. Nobody wants to be outdated. Everyone wants to be updated according to the fashion. Now, another factor can be level of income of the household. If the larger income of the household, then the larger is the quantity demanded of a particular good. ज़्यादा पैसा घर में सब कमा रहे हैं, सबकी income ज़्यादा आ रही है, so we all need something. So the quantity which is we are going to be demanded is larger. A very positive relation, right? Okay. So moving on to the next, we can see that the individual demand also gets affected because of income of the consumer and expectations in present and for the future. Okay, but before this, I want to tell you exception in factors affecting individual demand, that is about inferior goods. Now, what are inferior goods? Inferior goods are those goods which are of cheap quality. Yes, cheap quality. Now, who can afford cheap goods? Those who do not have enough money or those who are not earning good. ठीक है, तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है inferior goods की. Okay, now let's talk about the definition of inferior goods. What happened into this is there is a negative relationship between income and demand. Negative का मतलब है अगर आपकी income बढ़ भी जाती है ना, if there is increase in income, even then the demand of that particular good is decreased. For example, नीचे दे दिया rice, potatoes and instant noodles.
Now, I will talk about this by giving you one example. One example of a poor. हम सबसे पहले लेते हैं that these people are not able to earn much. So what happened? They cannot afford full cream milk for the whole month. What they will do? They will buy the toned milk because price differences आ जाता है. So किसी के लिए inferior goods cheap quality में कब आएगा? जब उसकी इनकम ही इतनी नहीं होगी, तो वो उसे क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बाय परचेजिंग हायर क्वालिटी और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स से, राइट. सो दे हैव टू बाय टोन्ड मिल्क इंस्टेड ऑफ फुल क्रीम मिल्क. तो ऐसे हम इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी देते हैं, ठीक है, बेसिस ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम लेवल. Okay, next is giffen goods. Giffen goods are those goods whose price effect is positive and income effect is negative. ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड अकर. पॉजिटिव रिलेशनशिप हो प्राइस और डिमांड के बीच में, मगर फिर भी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट रहता है. अब एक एग्जाम्पल दे दिया, ब्रेड. जैसे कि मैंने बताया था, ब्रेड हर कैटेगरी ऑफ लोगों को चाहिए, चाहे वो हायर हो, मिडिल हो या लोअर हो. फिर भी प्राइस क्या है उसकी, सभी के लिए सेम रहती हैं, चेंज तो नहीं होते. अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. गिफन गुड्स का कंसेप्ट सर गिफन से आया था इन द 19th सेंचुरी. उन्होंने रिवील किया था कि मेजर पोर्शन जो है इनकम का लोग खर्च करते हैं फॉर परचेजिंग पोटैटोज, और अ वेरी स्मॉल अमाउंट खर्च करते हैं फॉर परचेजिंग मीट. नाउ व्हाट हैपन, पोटैटोज वर चीप बट मीट वॉज कॉस्टली. ये तो अभी भी है. व्हेन द प्राइस ऑफ पोटैटोज टेंड टू इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज के प्राइस बढ़ गए एंड कंजप्शन ऑफ मीट वॉज कर्टेल, यानी कंजप्शन जो था मीट का वो कम करना पड़ गया. एंड नाउ दे आर नॉट परचेजिंग इनफ, सो दैट एज अ रिजल्ट दे सेव्ड मनी. लोगों ने क्या किया, अपने पैसों को बचाना शुरू कर दिया एंड दे स्पेंड मोर ऑन पोटैटोज टू मीट देयर फूड डेफिशिएंसी. इन दिस वे व्हाट हैपन, इवन द प्राइस ऑफ पोटैटो राइज बट क्वांटिटी परचेजेस ऑल्सो राइज. देखा, तो ये कैसा इफेक्ट था हमारा कि इवन प्राइस भी बढ़ गया, फिर भी लोगों ने पोटैटोज से ही अपना कंजप्शन पूरा करने के लिए सोचा. क्वांटिटी ऑफ परचेज राइज करी, ना कि सिर्फ मीट का पोर्शन सोच के. क्योंकि आप कंपैरिजन देखें तो ज़्यादा आपके पास पोटैटोज ही आएंगे, मीट नहीं आएगा. फिर एक और एक्सेप्शन है हमारी, दैट इज़ एमरजेंसी सिचुएशंस, जो हमारी नेचुरल कैलेमिटी में होती हैं. चाहे हमारे यहाँ फ्लड आ जाए, ड्रॉट, अर्थक्वेक आ जाए, या अभी कोरोना पीरियड आ जाए. इन सच सिचुएशंस पीपल ऑफन फियर द शॉर्टेज ऑफ द एसेंशियल्स. हम सबको डर बैठ जाता है कि कहीं एसेंशियल्स जो हमें चाहिए उनकी शॉर्टेज ना आ जाए. जैसे कि वेरी फेमस एग्जाम्पल, सैनिटाइजर्स के साथ ऐसा होना शुरू हो गया था. एंड हेंस डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इवन एट हायर प्राइसेस. अब प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी वो सबको चाहिए. दैट इज द नीड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ इज बैंडवैगन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस इफेक्ट? दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे कंज्यूमर हर वो चीज़ को परचेज करना चाहता है जो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने खरीदी होती है. कैसे? क्योंकि उनका बाइंग बिहेवियर चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ मेम्बर्स हैविंग स्मार्टफोन्स, लेट्स से आईफोन सबका ग्रुप है, देन मैं अपना फ़ोन निकालूँ एंड आई डू नॉट फील गुड, सो मेरी भी डिमांड किसके लिए हो जाएगी? सेम आईफोन के लिए हो जाएगी. तो ये कैसे इफेक्ट आया? बैंडवैगन इफेक्ट ड्यू टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और नेबर्स. Okay, I hope you are able to understand the factors that all affect individual demand. Now we will talk about factors that affect market demand. Okay, so before understanding this, there are few points. Point number one is size of the population. Size of the population matters a lot. जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम होती है वो जल्दी ही डेवलप्ड बन जाते हैं, और जहाँ हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है वहाँ लोगों की डिमांड भी बहुत रहती है, और वो डेमोक्रेटिक तो होते हैं मगर जल्दी से डेवलप नहीं हो पाते.
Okay, second point is composition of population. अब composition कैसे, किस तरह की population है आपकी ज़्यादा, ये बहुत एक कॉमन फैक्टर है. अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चों के लिए सामान ज़्यादा बनेगा, टॉयज़ ज़्यादा बनेंगे, कलर्स, बुक्स ज़्यादा बनेंगी. अगर यंगस्टर्स हैं ज़्यादा तो हम टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहने के लिए हमेशा डिमांड करेंगे गुड्स की. और अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, टेक्स्ट, या फिर आप बोलें वुडन स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, इन सब की ज़रूरतों को आपको ज़्यादा करना पड़ेगा. ऑर्थोपेडिक मेडिसिन्स, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत, हेल्थ सेंटर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं हम, और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना ना करें ये तो नहीं हो सकता. अब दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन, एक इक्वल, एक अनइक्वल. इक्वल में क्या होगा, जहाँ सबको सब बराबर से मिल रहा है. अनइक्वल में ऐसा नहीं है. ना अनइक्वल में हम लेते हैं बहुत ज़्यादा पुअर लोगों को और रिच लोगों का. ऐसा ही होता है. कंपैरेटिवली क्या पुअर लोग उतनी ही डिमांड करेंगे जितना रिच करते हैं? नो. तो वहाँ की डिमांड कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? लोअर डिमांड. वेयर एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ सभी रिच लोग हैं उनकी डिमांड कैसी रहेगी? कंपैरेटिवली हायर डिमांड. वेरी क्लियर. पुअर लोगों की लोअर डिमांड, रिच लोगों की, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोगों की हायर डिमांड. उनको सब कुछ चाहिए. सो these are all points of today, and I hope I'm able to make you understand at my best. If you like my video, then please share. But if you have any questions, then please ask to me, drop a message or comment, or any kind of help that I can give you in live classes.